Hi, I'm Casey. Welcome back to Epilepsy Thursdays, and yes, accept epilepsy. So, throughout the month of June, we are talking about all the restrictions that a person with epilepsy has to go through or that they have. ते आपण प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन्स म्हणजे ज्या गोष्टी ज्यांना एपिलेप्सी आहे ती लोक कुठल्या कुठल्या गोष्टी करू शकत नाहीत किंवा त्यांनी ते करणं योग्य नाहीये, उचित नाहीये किंवा ते करू त्यांना पॉसिबलच नाहीये करणं, ह्याविषयी आपण बोलत आहोत. सो आज भी हम उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं. उनमें से एक चीज़ जो जिनको एपिलेप्सी है वो लोग, मेरे जैसे लोग, नहीं कर पाते. लेकिन सबसे पहले सवाल, वे अपना नाम नहीं बताना चाहते, सो हम नहीं पूछेंगे, बताएंगे. दैट इज सवाल ये है, Casey, you said swimming is dangerous, but I love swimming and I'm also competing in races and I have epilepsy, so you are wrong. ह्यांचं असं म्हणणं आहे की केसी तुम्ही चुकीचे आहात. मी स्विमिंग काही डेंजरस नाही आहे, मला स्विमिंग आवडतं आणि मी कॉम्पिटिशन्समध्येही भाग घेतो आणि मला एपिलेप्सी आहे. वे ये कह रहे हैं कि केसी आप गलत हो क्योंकि मुझे एपिलेप्सी है. आपने ये कहा था कि स्विमिंग बहुत डेंजरस है, लेकिन मुझे स्विमिंग करना पसंद है और मैं कॉम्पिटिशन्स में बाकायदा हिस्सा भी लेता हूँ. सो नो, एक्चुअली आई वॉजंट रॉन्ग व्हेन आई सेड स्विमिंग इज डेंजरस. द थिंग इज, तुम्ही जर नॉर्मली स्विमिंग करत असाल तर इट इज एज डेंजरस और एज सेफ एज एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. लेकिन मैंने आई थिंक वीडियो में भी ये कहा था कि अगर आपको स्विमिंग करते करते सीजर आ जाए तो आप खुद को बचा नहीं पाओगे. स्विमिंग करता करता जर तुम्हाला सीजर आली तर तुम्ही स्वतःला वाचवू शकणार नाही आहात. Which is where the entire restriction comes into play. If you are swimming, you need someone, some guidance, some person to be with you. In case you experience a seizure while swimming, there has to be someone to help you get out of water so as to you don't drown. That is the whole purpose. You can't just go alone like any other normal human being and start swimming in a pool. You have to have a supervision. कोणाचं तरी तुमच्यावरती लक्ष असणं खूप गरजेचं आहे जेव्हा तुम्ही स्विमिंग करायला जाता. हे रिस्ट्रिक्शन आहे. जो इंडिपेंडेंस, जे स्वातंत्र्य किसी दूसरे इंसान को मिलेगा कि भाई मुझे स्विमिंग करने जाना है, जैसे कि हमने बैग उठाया जिम चले गए, अकेले हम जिमिंग जा सकते हैं, वैसे किसी ने बैग उठाया अकेले स्विमिंग करने चले गए. ये जो इंडिपेंडेंस नॉर्मल लोगों को है वो हमें नहीं है. हमें किसी ना किसी की सुपरविजन की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें पता तो है नहीं कि कब सीजर आ जाएगा, बता के तो सीजर आते हैं नहीं. तो अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और तभी आपको सीजर आ जाए तो कोई ना कोई वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पानी में से निकाल पाए और आप डूबे नहीं. तो यस, अगर आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हैं तो ऑल द बेस्ट. यस, यू कैन compete even when it comes to swimming or any other sport for that matter. No one is going to stop you. It's just that if you're doing it alone, you need to do it under supervision. Now, going back to the topic of the day, the topic is regarding disability. Is epilepsy a disability? Yes or no? Well, yes, epilepsy is a disability because there are so many things that a person with epilepsy cannot do. For example, you cannot operate heavy machinery. You cannot be a driver. You should not.
there are so many things that are hampered because you have epilepsy. Your lifestyle is so different because you have epilepsy. We are going to talk about lifestyle issues. We did talk about lifestyle, I think. Where did it go? Things that can help epilepsy lifestyle in August. We are going to talk about what your lifestyle, what a preferred lifestyle for a person with epilepsy is in the month of August. So yes, epilepsy is a disability because there are so many things that a person with epilepsy cannot or should not do. हाँ जी बिल्कुल, एपिलेप्सी एक डिसेबिलिटी है, व्यंग जिसे हम कहते हैं मराठी में, व्यंग आहे. कारण बऱ्याचशा गोष्टी ज्या नॉर्मल लोक करू शकतात ते ज्यांना एपिलेप्सी आहे ती लोक, आमच्यासारखी लोक नाही करू शकत किंवा त्यांना करणं ते योग्य नाही आहे. कर भी सकते हैं तो भी करना एक ना करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है जो एक पर्सन विद एपिलेप्सी नहीं कर पाते या नहीं, उचित नहीं है करना. तो हाँ, वो एक डिसेबिलिटी है. ये मेरा पर्सनल कहना है, ये केतकी मेरा पर्सनल कहना है कि हाँ जी एपिलेप्सी एक डिसेबिलिटी है और उसे डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर क्लासिफाई करना चाहिए. But on the other hand, there are also people who hate the word disability because I'm sorry for that. There are so many people who hate being called disabled because somewhere our human psyche, in our mind, it has been conditioned that a person who is disabled is unable to do certain things or is not fit to do so many things. But no, that is not true. Thanks to modern medicines, thanks to science and ever evolving new medications and research that has been going on in the field of not only epilepsy, in the field of every other disabilities as well, that and humans as we are, man is always pushing his limits, is trying and breaking all the barriers and frontiers all the time. So yes, it is possible to do anything. So that does not mean that you cannot do certain things. I mean, being an actor when you have epilepsy was quite a challenge. There are so many actors, even in Bollywood, who hide that they have epilepsy. I wouldn't take their names because they themselves are not comfortable talking about it as yet. So I'm not going to name them. But there are actors in Bollywood as well who have epilepsy and are acting, are pushing their limits, are pushing their, on a daily basis, they are fighting this battle thanks to modern medicine. So yes, I won't say that there is anything inferior when you call yourself a person with a disability. बऱ्याच वेळेला काय होतं की आम्ही डिसेबल्ड आहोत, हा जो शब्द आहे ना डिसेबल, ह्या शब्दाच्या मागे ना इनव्हेरिएबली कुठेतरी ना एक नेगेटिव्ह हे त्याला रूपांतर देण्यात आलेलं आहे की बाबा त्याला व्यंग आहे. तर एक ना नेगेटिव्ह एक बघण्याचा दृष्टिकोन त्या व्यक्तीबद्दल खूप बदलला जातो. खरं तर त्याची गरज नाहीये, तो बदलण्याची गरज नाहीये. विकार आहे, व्यंग आहे, पण ह्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही काही जे ठरवाल ते करू शकणार नाही. तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही करू शकता. कारण थँक्स टू, मी जसं मगाशी इंग्लिशमध्ये म्हणाले, जे नवीन औषधं जी बाजारात येत आहेत, जो रिसर्च केला जातोय ह्या फील्डमध्ये, त्याच्याने नवीन खूप ऑप्शन्स निर्माण होत आहेत. त्याच्याने लोकांचं आयुष्य खूप जास्त सुधारतंय. त्यामुळे कुठेही तुम्ही कमी आहात असा विचार करू नका. यू आर नॉट, यू आर नोवेअर, हाऊ डू आय पुट इट विदाउट बीइंग रूड,
you're in no sense less than a person who does not have epilepsy. आप कहीं आप कोई आप में कोई कमतरता नहीं है क्योंकि आपको एपिलेप्सी है. हाँ, आप डिसेबल्ड हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है. इसका मतलब ये नहीं कि आप जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है वो आप नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. मैं अकेली नहीं, बॉलीवुड में भी काफ़ी एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस हैं जिनको एपिलेप्सी है. वो मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है उस बारे में फ़िलहाल बात करने के लिए. बट ऐसे एक्टर्स हैं जो हर दिन लड़ रहे हैं एपिलेप्सी के साथ, जो हर दिन अपनी लिमिट को पुश कर रहे हैं, जो हर दिन ऐसे ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं. लॉकडाउन में नहीं, ऑफ कोर्स, वेरी सैड जोक, बट ऐसे ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं जो कि कई साल पहले पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मेडिसिन्स वैसे नहीं थे. सो मॉडर्न मेडिसिन्स की वजह से, थैंक्स टू रिसर्च जो हो रहा है इस फील्ड में, हम बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं. तो ऐसे मत समझिए कि आप में कोई कमी है या फिर आप किसी नॉर्मल इंसान से कम है. पर हाँ, आप फिर भी डिसेबल्ड है, ये मेरा मानना है. I truly believe that I'm disabled. That does not, but my disability does not make me inferior compared to any normal minion. I'm as good or as equal to any other normal person. Just because I have epilepsy does not mean that I'm any different, or yes, I am different, which is exactly why I call myself disabled. But that does not mean that I'm inferior to them. That's about it. So according to me, personally, epilepsy is a disability and it should be classified as a disability. And yes, because we find it so difficult to do certain things, we should be considered on a serious note on the disability spectrum. But no, that does not make us we should be judged on our merits as well. That's all for today. Yes, I do remember that we were going to start our community, but due to the lockdown, we are unable to do so. We will as soon as possible, but till then, stay strong, keep fighting. If you like the video, do give it a thumbs up. If you are, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको योगदान तो देना है, तुम्हाला जनजागृती तर करायची आहे, पण तुम्हाला कळत नाही आहे कसं करायचं, तर माझे व्हिडिओ शेअर करा आणि तुम्ही जनजागृती इनव्हेरिएबली करू शकाल. तुम्हाला काहीही प्रश्न असेल तर खालती कमेंट सेक्शनमध्ये तो प्रश्न विचारू शकता. जर तुम्हाला तुमचं नाव डिक्लेअर करायचं नसेल, अगर आपको सवाल पूछना है लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है, छिपानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं. द इंस्टाग्राम हैंडल इज epilepsy_warrior_queen. So you can directly ask me questions there and I reply to each and every person. मी प्रत्येकाला रिप्लाय देते. जर तुम्ही अश्लील कमेंट केली तरच तुम्हाला रिप्लाय मिळणार नाही, स्वाभाविक आहे, पण नाहीतर प्रत्येकाला रिप्लाय दिला जातो. मैं हर एक इंसान को जितना हो सके उतना रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ. और जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल, आपके मैसेजेस ज़रूर देखती हूँ. सो यस, do subscribe. Let's increase this bonding, this community that we have created through Accept Epilepsy, and let's work towards a single goal when it comes to epilepsy. And stay strong, keep fighting, and as always, stay happy, stay golden.